be fine and happy. Today we will read this chapter, Sound of Letters, Phonics. Okay. Let's just start now this chapter. Every letter in English alphabet has its own sound. And यहाँ पर इंग्लिश की जो भी लेटर होते हैं सभी की अपनी अपनी साउंड होती है, मीन ध्वनि होती है. एंड वी कॉल इट फोनिक्स. उन्हीं को हम फोनिक्स कहते हैं. लर्निंग द साउंड इज एसेंशियल फॉर करेक्ट pronunciation of the words as well as for proper understanding of spoken English. जो भी लेटर्स की साउंड होती है वही हमारी प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करती है, मीन शब्दों को बनाने में हेल्प करती है और हमें समझने में हेल्पिंग होती है. ओके, नेक्स्ट है, लेट्स अस लर्न द साउंड ऑफ लेटर्स. E as in apple. Next B. B से साउंड आती है बा. बा से आती है as in badge. ये C. C का है क. as in cat. ये D. D से dog. as in dog. E. E as in elephant. F. F से आती है F as in fish. G. G से बनती है ग. as in got. H. Ha. as in hammer. I. E as in igloo. Z. Ja as in joker. K. Ka as in kite. L. La as in lion. M. Ma as in moon. N. Na as in nest. O. Ow as in orange. P. Pa as in parrot. Queen. Pa as in quack. R. Ra as in rose. S. Sa as in sun. T. Ta as in tin. U. A as in umbrella. V. Va as in violin. W. Va as in watch. X. X in X-ray. Y. Yay as in yarn. Z. Za as in zebra. Okay, then this chapter will be completed. I hope that you will be understood it. Thank you.